Hello beta, welcome to Ashan. This is a biology class for you. Biology, the most important subject for your life. And this subject can transform your life. So please you concentrate in biology. बायोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट चैप्टर है उसको अंदर सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है ना. सो उसको अंदर जो एवरी टॉपिक है एनसीईआरटी में सो वो तो इम्पोर्टेंट है नीट एग्जाम का अंदर. सो हम लोग को क्या करना है एनसीईआरटी को जो लाइन है ना एनसीईआरटी में सो हम लोग एवरी लाइन का अंदर क्या है क्या टॉपिक का डेप्थ है उसको समझना है इस क्लास का अंदर राइट. एंड ऑल्सो तुम्हें एक नोट प्रिपेयर करना है बिकॉज तुमको तो एमसीक्यू करना है ना. और तुम एंट्रेंस में तुम कुछ करना होगा तो एंट्रेंस में एमसीक्यू आता है. सो कुछ नोट भी प्रिपेयर करना होगा. तुम्हारा ये वाला क्लास में हम तुमको बोले हेल्प भी करेगा कैसे तुमको नोट्स भी प्रिपेयर करना है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स. सो पहले देखो एनसीईआरटी बुक्स में एक इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन को हम लोग नहीं चढ़ना है बिकॉज इधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो इंट्रोडक्शन में क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा सराउंडिंग से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नॉन लिविंग थिंग्स है दो थिंग्स ही तो है. बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है ना उसको तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होता है मल्टीसेलुलर भी होता है बट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. So cell is the basic unit of life. Every living organism like human beings are the multicellular organism. So we have the many cells but cells are present there. Cell तो रहना ही होगा. Without cell living organism survive ही नहीं कर सकते. बट उसको नंबर ना डिफर हो सकता है बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सिंगल सेल होता है लाइक एमीबा होता है राइट लाइक बैक्टीरिया होता है दे हैव ओनली वन सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर में क्या होता है मेनी सेल होता है बहुत सारा सेल. यू कैन नॉट काउंट दिस बिकॉज द ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स इज देयर राइट. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज लाइक सेल का माफिक हम क्लासिफिकेशन करेगा ना सो दो टाइप का होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइट. ये वाला इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी बुक्स में है. नेक्स्ट देखो 8.1 एनसीईआरटी से हम लोग ये वाला जो टॉपिक है चलो हम लोग डिस्कस करना होगा. व्हाट इज द सेल. फर्स्ट हम लोग को समझना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है. ऑलरेडी वी नो दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है दे हैव ओनली वन सिंगल सेल राइट. बट you know they have the independent existence is there. Independently they exist कर सकते हैं because they have the power. Every cell one single cell is there but this cell have the power to independent existence. This cell have the power to perform the all essential function which is necessary for living things. Right. So unicellular organism like the bacteria or amoeba they have independent existence and they have to perform the all functions of life. So how we define the cell. सेल का तुम डिफाइन कैसे करेगा. देखो सेल का जो डेफिनेशन होगा दैट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है. सेल एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पार्ट है एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन होता है ना क्या कौन चीज कंट्रोल करता है वो सेल तो कंट्रोल करता है. सो सेल आल्सो द फंक्शनल यूनिट. सो ऐसे सम अप कर देगा तो तुमको डेफिनेशन भी आ जाएगा. सो द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज द सेल. डेफिनेशन हो गया वेरी इजी. एनसीईआरटी बुक्स में ये जो पॉइंट है ना तुम्हारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तुम्हारा एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट साइंटिस्ट आर वर्क ऑन द सेल. कुछ तो साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग को माइंड में लेना ही है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर साइंस. फर्स्ट टाइम एंटोना वॉन लेeuwenhoek first time they saw and described the life cell right. This is the most important. लाइफ सेल का
फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कौन साइंटिस्ट किया था? एंटोनी वॉन लीएनहॉक। उसको अंदर हम लोग का एक साइंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन भी अच्छे से माइंड में रखो। रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन क्या था? डिस्कवर द न्यूक्लियस। सेल का अंदर जो पार्ट होता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस, and they are brain of the cell. These are discovered by the Robert Brown. So Anthony von Leeuwenhoek and Robert Brown का जो contribution है, that is the most important. But this time सेल का जो डिस्कवर हुआ, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स, उसको तो साइंस में बहुत सारा हेल्प हुआ। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इतना सक्सेस क्यों मिला है? सेल का इतना अच्छा से हम लोग को समझ में क्यों आया है? बिकॉज द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। यू नो द सेल इज अ वेरी टाइनी, so generally we cannot see it in the naked eye, so we are use the microscope. So without microscope we cannot see the cell. तुम तो सेल के इतना छोटा है ना, तुम तो देख नहीं पाएगा ना, सो माइक्रोस्कोप जरूरत है। ऑनली माइक्रोस्कोप तो डिफरेंट टाइप का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। बट लाइट माइक्रोस्कोप का कोई डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज उसको मैग्निफिकेशन पावर कितना है, लाइक 1000x और 15XX 1500। बट सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसको जानने के लिए हम लोग का लाइट माइक्रोस्कोप से काम नहीं होगा। सो हम लोग का चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दिस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव्ड हुआ था। दैट इज आर हेल्प किया था ना हम लोग का सेल का रिसर्च फील्ड में। So we are get the details information about the cell, but behind that the microscope is there, right? So microscope take the very important role. Next देखो 8.2 सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, एनईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 1838, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेडिन क्या था? स्लेडिन एक जर्मन बोटनिस्ट था। बोटनिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट हु अल्टीमेटली रिसर्च ऑन द प्लांट फील्ड। प्लांट के लिए जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं ना, उसको हम लोग बोटनिस्ट बोलते हैं। बट स्लेडिन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द प्लांट सेल and give a most important contribution in our science, that the plant cell is form a tissue. That means in the plant cell there are some of okay क्या बनता है? Plant tissue बनता है। This is the most important contribution. Like in the same time 1839, after 1 year, Theodore Swan, a very important scientist also, but जर्मन नहीं था, ब्रिटिश था सोडर्सवन, एंड बोटनिस्ट भी नहीं था, वो था जूलॉजिस्ट। दैट मींस दे आर एक्सपर्ट इन द एनिमल, सो दे आर स्टडी द एनिमल सेल एंड रिपोर्ट दैट द एनिमल सेल्स हैव ए आउटर membrane. This outer membrane or outer layer is plasma membrane, we already know that, but first time is given by this one. Also, this one give a contribution in our plant cell. Outer wall of the plant cell, that is not the plasma membrane. This is the cell wall is there. So the animal cell, the outer layer is the plasma membrane, and plant cell उसको अंदर जो तो आउटर लेयर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं हम लोग। सो स्लेडिन एंड स्क्वान, उसको जो कंट्रीब्यूशन था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था हमारा जो सेल का जो साइटोलॉजी होता है, सेल बायोलॉजी होता है, उसको अंदर क्या था हाइपोथेसिस?
Plant or animals, they are composed of cells or the products of cells. This is the hypothesis, right? This one is a hypothesis. So Sladen and Squall given the cell theory. Cell theory तो हम लोग कहाँ गया? That is the most important contribution था. But cell theory का एक disadvantage भी था. क्या था disadvantage? How cell were formed? किधर से सेल फॉर्म होता है? That is not explained by the cell theory. This is the disadvantage. But this disadvantage solved in the 1855 by the scientist Rudolf Virchow. Rudolf Virchow किया सेल को जो प्रोडक्शन होता है ना न्यू सेल उसको मेन ओरिजिन उसको फाइंड आउट करना था रुडोल्फ वर्चू का. फाइंड आउट कर भी लिया. कैसे? सेल डिवाइड होता है. That means the division is the most important process by which the new cells are formed from the pre-existing cells. This contribution is most important. This is the modern concept. Modern concept होता है ना सेल थ्योरी का. That is given by रुडोल्फ वर्चू में. रुडोल्फ वर्चू दिया था हम लोग का. एंड जो न्यू सेल्स फॉर्म होता है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं दैट इज द omnicellular e cellular. This concept is given by Rudolf Virchow. So the Rudolf Virchow given the modified cell theory, and we get the final shape of the cell theory. हम लोग को the final shape मिल गया. जब cells, every living organism made up of cells, and all the all the structural and functional characteristic features depend on the cell, and cells ultimately come from pre-existing cell. This is the final cell. So please you bear in mind the cell theory and their final cell, that all living organisms are composed of cells and the products of cells, and all cells arise from pre-existing cells. This is the most important contribution, right? देखो आज हम लोग का जो एनसीईआरटी का दो टॉपिक हम लोग वन बाय वन डिस्कस किया था ना आज का क्लास में. शो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था. इधर से बहुत सारे एमसीक्यू भी आ सकते हैं. उसको रुडोल्फ वर्चू का कंट्रीब्यूशन, स्क्वान का कंट्रीब्यूशन और स्लेडेन का कंट्रीब्यूशन. प्लीज ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू राइट डाउन योर नोटबुक. तुम इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो. सो नोट डाउन करने से क्या होगा? तुमको इजीली अच्छा में समझ में आ जाएगा ना. सो तुमको एमसीक्यू करने का इजी एक पाथवे मिल जाएगा. इजी तुम्हारा हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करना. सो आज का क्लास इतना था. थैंक यू वेरी मच. एंड नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अनदर सम टॉपिक of the cell from the NCERT book. Thank you very much.